but from my understanding, nutrition is a bigger challenge because if we go to the statistics, above 40% of children under 5 years of age are stunted, and there is widespread vitamin A, iron, and iodine deficiencies, and much more. If you go the statistics, the numbers are very worrisome. So based on this, we understand that food fortification is globally recognized solutions to tackle these issues, which are quite cost effective. But Pakistan progress to this fortification is quite limited, and we are going to discuss what are the regulatory gaps, what are the complex compliance gaps or barriers, and how we can improve consumer awareness regarding these fortifications. So I am delighted to introduce my distinguished panel of experts. First of all, I request Dr. Tahira Siddiqui, Deputy Director, Operations, Islamabad Food Authority, a leading expert on food safety, regulation, and inspections reforms. Please join the podium, madam. Next is Dr. Tanveer Ibrahim, Chief of Nutrition, National Institute of Health, leading national initiative on evidence-based nutrition and standards. Sir, please also join. Next is Dr. Asif Ahmed. He's a professor at PMS Arid Agriculture University. He's a Fulbright scholar and expert in food technology, research, and innovation. Sir, please join that. And lastly, we have Dua Mubin, Senior Research Associate at Sustainable Development Policy Institute. She is actively working on nutrition and other awareness-related issues, particularly the public and private partnership. So we are very graced experts to have on the panel. So let me start with the sitting. Regulations, regulators face the challenge of enforcement across thousands of mills, chakis, and small producers. When we thinking for the fortifications, that's very important that the geographical spread is so wide, so how the regulations can be enforced. And similarly, the SMEs who are struggling with the premix cost, testing, and limited incentives. So these are the second areas where we are going to discuss. And consumer lack of awareness, as I earlier mentioned, that's very important. Particularly, we are aware that iodine salt is very much now in our knowledge or in our information that help us to improve our nutrition values or health. But there are a lot of many other products that need to be fortified. And lastly, the topic which we are going to discuss is the digital tools, of course, that help to reach the geographical widespread areas where we can implement this fortification and other actionable recommendations which our panelists will discuss. So first of all, let's start with Dr. Tahira. I just like to request that if you highlight some of the issues that relate to the fortification standards in Pakistan, particularly there is a lack of compliance remain uneven across the provinces, across the districts. So what's your understanding in this? And what are the key regulatory and enforcement challenges as a regulator you face that this fortification is important? And lastly, what reforms can help streamline monitoring across provinces? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much, Dr. Kashif. Fortification is, you can say nowadays, is a hot topic to discuss and to implement, because we have so many issues. Our food is not, you can say, just fulfilling our requirements of nutrients. So that's why we have the need to fortify. Just like we have the issues many years back of thyroid, then iodine was introduced to add in the salt so that we can cover up that issue.
because we don't have so much resources to expense on the health. If we will spend a single dollar in nutrition sector, then we can save the $15 from the health sector that we are spending. So this is the biggest challenge at this time. By the help of different organizations and the legislative measures, iodine became compulsory to be the part of the salt. And at this time in Pakistan, wherever you will buy the salt, either from a local bazaar or from the shops, from the packaged material, wherever you will buy, it will have the iodine. This is the good thing. But now we have the challenge to fortify the wheat because we have iron deficiency. Our females approximately 50% and our kids 54% or more, they are anemic. And we don't have so much resources to give them the folic acid or iron tablets or other resources at their household level, but we have our staple food, that is wheat. Everybody in Pakistan, they know they have to eat chapati, roti, bread, everything just like this on daily basis. So if we will fortify wheat, then we can cover up to some extent this issue. But we have the issues. Sometimes the local manufacturers, they are not cooperating because they said we have extra burden, we have to increase the price, people will not purchase because this is the supply demand. It is a supply demand basis thing. That's why. But being a Pakistani, we have to focus on that thing. That if we will add iron, if we will fortify the foods, it will help our new generations to grow better. This is the main reason. But implementation, we have legislation issues also because in Pakistan, there are 5 food authorities that are working in silos. We don't have any centralized system. This is the biggest challenge. Although we have, after CCIDCN, we have the harmonized standards, but there is no legislation regarding the fortification. 2 or 3 provinces or 2 or 3 authorities have that legislation, but they have implementation issues. But still, in 2 areas, we don't have legislation regarding the fortification. We are unable to make it implement, but we are trying to convince the people, please try
community level, from warehouse to end table, the HACCP studies. So these activities can minimize all the issues related to malnutrition and micronutrient deficiency. But these activities would be carried out by our partners. So we need to strengthen our regulatory bodies, Islamabad Food Authority, other food authorities, and standard developing authorities and nutrition at NIH for the public health awareness, and our academia to identify different new ways and means through scientific knowledge to address this issues by fortification activities. But Fortify is not the food systems or something else. We need to fortify our country too, and that is the incorporation of our economic growth by the utilization or involvement of our population, including our youth. So we need to involve our youth or through academia by motivating them, by the developing some entrepreneurship or stewardship, that they could move for their own job facilities, not for the sake of looking for some jobs from different institutions. They need to get some proposals to identify and then rectify those issues which are important in Pakistan with respect to malnutrition. Thank you. डॉक्टर साहब एक फॉलो अप क्वेश्चन है, बहुत मेरे भी ज़हन में आ रहा था जब आई वाज लिसनिंग टू यू व्हेन यू टॉक अबाउट द डेफिशिएंसीज, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज, आयोडीन की आपने बात की, व्हाट यू फाउंड के डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक जो स्टेटस है लोगों का, कुछ अमीर गरीब और डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड, तो इस तरह का कुछ इस तरह का डाटा है आपके पास अक्रॉस द प्रोविंसेस, बट वेयर इज मोर डेफिशिएंसी, वेयर इज लेस डेफिशिएंसी, क्या प्रेवलेंस है, इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन, ताकि हम फिर डॉक्टर आसिफ की तरफ जाएं और फिर इस तरह का एक और इससे मिलता हुआ जो क्वेश्चन हम कर सकें. I think Dr. Asif will respond very well in this regard, because the volunteers team from the academia, they are working on these aspects very finely, and I have participated in one of the activity from Dr. Asif, and their students, they astonishingly brilliant, and they are submitting some such proposals which can use the environmental filth to reutilize for the sake of betterment of our environment. Sir, same question to you, and let us know कि एक natural food system है, we can eat different mix of food, diversified food, so वो एक natural way of taking the nutrients versus this is artificial, adding additional nutrients in the food systems. What do you think, what the science tells us, and what's your geographical spread, what your research tells us, that what is the geographical spread of nutrition in Pakistan? Over to you. Thank you, Dr. Kashif. I am thankful to STPI for inviting me for such an important talk. Basically, if we start with a different geographical region of Pakistan, and we have a great history of the iodine deficiency in Pakistan, and that was the I think the first of great fortification program, mass fortification program that was initiated in Pakistan back about 45 years back. Mm-hmm. And we have learned a lot from that experience. But we have been successful for that program. A lot of industry was involved in that. A lot of research organization, academia, as well as the regulatory authority. They are working. They are working in a combined scenario. So we got a lot of successes from that. But following the National Nutrition Survey, we come across some new
deficiencies, micronutrient deficiencies, for example, the vitamin D, calcium, iron. So these are new for our country. And that prevails, as you asked, what is the prevalence of that situation in Pakistan. So that prevail in all of the provinces, and especially in the female community of Pakistan. And two susceptible community, one is the females and other is the children under 5 years of age. So when we talk about especially the iron and the calcium, iron is very common deficient in children under 5 years of age, and calcium, that is especially a focus point for the calcium and the vitamin D as well. For the females of Pakistan, more than 50% population across the Pakistan, and more astonishingly, the urban population of females that are actually susceptible to these one, especially vitamin D and the calcium. And there are so many strategies to combat all of that situation in different regions of Pakistan. At the government level, all of the provincial governments are working on that with the help of the regulatory authorities especially. And some of the NGOs, they are working on that. That's the iron fortification programs, and especially at the Punjab level, the local atta chakis, they were empowered for fortification plan, and there are basically different kind of the salts. They are being fortified in the floor. Nutritional International, they are working on that. GAIN is working on that. STPI is working on that. And recently, we have our university, our academia, we have started with the army. अभी हमने कुछ अर्से पहले जो है वो आर्मी के साथ जो है वो काम शुरू किया for the iron fortification, and they have a program to establish that fortification facility in the Bahawalpur region. So we identified the whole microfeeder system for that, and what kind of the strategies they should adopt. And we are in a process of developing an MOU with that army at the GHQ level, working on this iron fortification issue, especially in the South Punjab region. So why we should be adopting that? Because we are facing these micronutrient deficiencies. They are contributing towards the stunting, cognitive delays, especially in the child. उनके सोचने समझने की जो सलाहियत है, उसमें delays जो है वो आते हैं, especially in the children 5 years of age तक जो है. So there is as a result of that, there is a poor educational outcomes due to the, although that is required in very minute amounts. So another program, that's the fortification of the fats and oil for the vitamin D. That's mandatory, actually. That's mandatory. So I think there should be a three-pronged strategy to combat all of that situation in Pakistan. There's the regulators. Dr. Tahira is sitting as the regulatory authority in Islamabad. Same is the case with the Punjab Food Authority and other provincial authorities. Then there is a big role of the SMEs, because there are, if we look at the statistics, there are more than 5 million enterprises, SMEs in Pakistan. They can work on that. And the third prong is the consumer education, because there is a lack of the consumer education about these deficiencies. And there is one of the
survey from the STPI that what is the awareness level of the labeling, food labeling, and it was concluded that about only 25% urban population that can understand the food fortification. So that tells us that there is a great dire need for consumer education in this sector. Thank you very much. Thank you, Dr. Saab. Very elaborative discussion on that. So I have some questions regarding this, but I come later. I now request दुआ कि आप बताएं आप क्या काम कर रही हैं न्यूट्रिशन के ऊपर, खास तौर पे व्हाट आर द इनोवेशन वेज के जो आपके रिसर्च के अंदर कैसे इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज के जरिए आप यू ब्रिंग न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स टू द फूड सिस्टम. ओवर टू यू. Yes. Thank you so much for this opportunity. So currently we're working with on a South Asian coalition for improved nutrition. That's a coalition between countries like Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, and Pakistan, and we're working towards providing healthy food and through fiscal and trade policies. And for making fortified food available to people, the first thing that we need to see is that around 60% of Pakistan's population cannot even afford a healthy diet. That is, our cost of a healthy diet stands at $3.95, and the poverty poverty benchmark is at $3. That means that people living below $3 come under below poverty line, and our cost of a healthy diet is at 3.95, like around $4 approximately. So the first thing is affordability is the main concern. So people are more concerned about feeding themselves before accessing healthy diets or fortified foods. So first thing would be to work towards making food affordable overall to the general audience, to the public. And for that, we are working on a regional level right now. That is collaboration, because Pakistan is also suffering of around 40.9 million people are undernourished in our country. So that would be the first step, in my opinion. And then next would be that to make people reach out for the food is to make it for them to trust that what they're being fed is important for them, but we have to make them believe that fortified food is necessary for them. It is good for them in term also. So that is something that we need to work towards. And there's some basic points that for people to reach out to those food is first would be marketing. That is a basic rule is to have fortified food at your eye level, so the people can just grab it and go, because people do not have time right now. It's we live in a very fast-paced community lifestyle these days. So people do not have time to stop and see what they're buying or what is required or not. So maybe have them approach, have these kind of foods accessible in such a way. Next would be, of course, through this social media era, people watch ads on YouTube while watching games. So incorporate that during those events, like not only through television, but through social media also. We see ads being played during games, during reading online, anywhere, anything. So maybe start feeding people that this is necessary for you through innovative way, through a better, a more creative way, I would say, because now the media or marketing strategies have also evolved. And then the media partnerships are very important. We need to have bigger brands on our on this page for fortification. They need to endorse it because they have a mass audience. They can grab attention easily, and they have the means and the money to advocate or create this advocacy at a larger level. So these are some very generic pointers that can be used, in my opinion. Thank you. मुझे ये एक चीज़ जो अभी मैं डिस्कस देख रहा था मीडिया की आपने बात की. Of course we have watched that media, the number of ads is coming in, ये oil जो है या ये चीज़ें that's fortified, but does it really fortified or not, ये हम मैडम ताहिरा से पूछते हैं कि बहुत सारी checklists जो हैं डेवलप हुई हैं. What is your take on that, कि ये जो
इंडस्ट्री लेवल पे, SMEs खासतौर पे SMEs लेवल पे, चक्कीज लेवल पे, ये जो फोर्टिफिकेशन के लिए मुख्तलिफ चेक लिस्ट हैं, डज इट एग्जिस्ट, डज इट वो जो डिफरेंट प्रोविंसेस आर द सेम वन और इट्स डिफरेंट वन, व्हाट आर द चैलेंजेस कौन से हैं? ख़ास तौर पे अभी जो डॉक्टर साहब ने भी बात की कि वो जो लेबलिंग, फूड लेबलिंग है, दैट्स अनदर चैलेंज। ये दो एरियाज़ के ऊपर अगर आप कोई हाईलाइट कर बात कर सकते। थैंक थैंक यू सो मच डॉक्टर काशिफ। एक्चुअली इट्स ट्रू कि हमारी कोई इस तरह की चेक लिस्ट नोटिफाइड किस्म की नहीं है, उस पर हमें थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनको, या जैसे साल्ट के अंदर अगर हमने आयोडीन चेक करना है, जैसे सर ने अभी कहा, इट वाज रियली एस्टॉनिशिंग कि इन्होंने कहा कि पिंडी के अंदर इन्होंने सैम्पलिंग की और इनको नहीं मिला। मैं ऑफ एंड ऑन इवन जो संडे बाजार H9 में लगता है सबसे बड़ा, या उसके अलावा भी टीम से कहती हूँ वो चेक करें, और हेल्थ डिपार्टमेंट सैंपल्स खुद भी कलेक्ट करवाते हैं। तो अभी तक हमारा इस्लामाबाद से कोई ऐसा सैंपल फेल नहीं आया जिसमें आयोडीन ना हो। मतलब 2 सैंपल्स इस बेस पे फेल थे कि उनमें कम था, और जस्ट लाइक उन्होंने बात की कि आयोडीन वेपोरेट हो जाता है। तो मेरा ख्याल है हमें जो चेक लिस्ट बनानी चाहिए उसमें ये चीजें भी हमें ऐड करनी पड़ेंगी कि किस लेवल तक हम डालेंगे तो वो कंज्यूमर लेवल तक पहुंचने तक वो जो फोर्टिफिकेंट है वो अवेलेबल रहेगा। ये चीज हमें ऐड करनी पड़ेगी। अब लास्ट टाइम एक सॉल्ट यूनिट वाले मेरे पास आए, कहते हैं कि मैडम जब ह्यूमिड वेदर होता है तो उसकी वजह से भी आयोडीन कम हो जाती है, तो आपकी टीम फाइन कर जाती है। तो मैंने कहा आपको जब पता है कि आपका स्टॉक ह्यूमिड वेदर में पड़ा रहेगा तो आपको जो रिकमेंड किया गया उससे थोड़ा ज्यादा आयोडीन ऐड कर लें। आप ऐड करेंगे वो उतना वेपरेट होके एटलीस्ट जो कंज्यूमर लेवल तक पहुंचना चाहिए वो तो उन्हें मिलेगा ना। तो हमें इस किस्म की चेकलिस्ट डेवलप करनी पड़ेंगी। और मेरा ख्याल है अगर जैसे हमारे हार्मोनाइज स्टैंडर्ड्स हैं तो अगर चेकलिस्ट भी हम हार्मोनाइज तमाम प्रोविंसेस, जितनी भी प्रोविंशियल फूड अथॉरिटीज हैं उनके लिए बना लें तो वो ज्यादा एक अच्छा काम हो जाएगा। और ये जैसे अब ऑयल के अंदर विटामिन A and D और E की हम कहते हैं जी फोर्टिफिकेशन करें, और इंडस्ट्रीज जो हैं उस पर कुछ कर भी रही हैं। उसके लिए NI का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि उन्होंने हमें वो प्रोवाइड करते हैं ऑन स्पॉट टेस्टिंग किट्स विटामिन A and D की, कि हम चेक कर सकें ऑयल का पैकेट कोई भी ओपन करके कि इसमें विटामिन A कितना है, विटामिन D कितना है, और फोर्टिफिकेशन अगर वो क्लेम कर रहे हैं लेवल पर वो है भी या नहीं है। यू। मुझे अभी आपसे एक और भी बात करनी है ऑन द डिजिटल टूल्स, कौन से अवेलेबल हैं, व्हाट टूल्स you think it's more appropriate if inspection is required? तो वो उस पर मैं आप आता हूँ। तो ये डॉक्टर तनवीर साहब, अगर यू टॉक्ड अबाउट डाटा, डाटा इज एवरीथिंग, सो न्यूट्रिशनल डाटा, हाउ वी कैन, उसकी क्या सिचुएशन है? वी नो दैट डिफरेंट डाटा सेट्स आर अवेलेबल, बट जो फूड न्यूट्रिशन का डाटा है इट्स क्वाइट ओल्ड, इट्स 2018, वी ऑलवेज रेफर दैट ये 2018 में दिस एक न्यूट्रिशन सर्वे हुआ था। उसके बाद व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ डाटा, इज इट अपडेटेड yet or still there is work is keep going on? तो इस पे डाटा मैनेजमेंट पे और डाटा कलेक्शन के ऊपर अगर आप कुछ बता सकें, particularly related to the nutrition side. मैं डॉक्टर तायरा की बात को एंडोर्स करते हुए थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करना चाहूँगा। पहले आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ DRAP with respect to health and OTC, and we are auditing certain nutraceutical industries too. In this regard, we have certain toolkits or checklists available with respect to CGMP as well as the manufacturing units. And by the grace of Allah, we also started some initiative in the capacity building program by launching postgraduate diplomas at NIH in clinical nutrition, public health nutrition, and food quality and adulteration. We are purposely uh, started these initiatives because we have receiving around more than 500 interns from Bhavalpur to GB from different universities, and we are very much surprised that due to lack of uh, lab strengthening,
most of the HND and food and nutrition sciences students are practically non-sound. So we need to strengthen them by incorporating those interns and students in our organization through capacity building in the field of food quality by the analysis as analytical tools, by incorporating food safety tools through the analysis in the microbiology labs, chemical contaminants. We also incorporating them in the nutritional profiling lab. So we have the proximate analysis of different food commodities, and most of the students are coming to us for the analysis of those food commodities by uh, before and after interventions. So they are working on the fortifications, and they also working on the enhancement of protein contents in most of the protein bars and their products. They are also working for the reduction of trans fatty acids. They are also working for the enhancement in the vitamins and minerals contents. So those labs help them in the analysis of their interventions to evaluate. In the same way, uh, we started these programs to strengthen their capacity building by providing the platform through the provision of some technical toolkit that they have been equipped by those toolkit, and they when they will move in different fields, they can utilize them. So we identified that most of the students, even they are working for the human nutrition and dietetics, they are looking for the clinical aspects, and they um, purposely known that they have been the class of medical facilitation, and they would join hospitals and they would act as a doctors. But no policy has been initiated in this regard to incorporate them. So we identified the different gaps, and we giving the awareness to them that they can move in more than 12 fields rather than the clinical fields. So those fields would be food quality, food safety, public health nutrition, applied nutrition, uh, INGOs, regulatory awareness. And initially we conducted a workshop, and we uh, strengthened our students, our participants, with respect to laboratory services. So we provided them a checklist, and giving them the points as the um, completed fully functional, uh, with the limited access and with the zero access. So uh, they have been conveyed that you need to visit one of the lab, and you need to evaluate that lab on these parameters and give them rate. So they visited and identified most of the labs, and even they when they are working on some on-job trainings, they also work over there, and they calculated on these parameters, and some of the labs were around 50% of total CGLP compliance. So in this way, we are polishing these students that they don't have one of the field which they want to move. They have other options too. In this way, most of the INGOs and even United Nations, they're working on different aspects of nutrition, including malnutrition, NCDs, foodborne diseases, and so on. So they have all the areas to be identified. With respect to data, our National Nutrition Survey that has been conducted in 2018, and we are very much eager to announce the next one. In this way, we have been discussed with the Planning Commission. They are in the process. I think in this year or in the next uh, few months, it would be launched from Planning Commission, and some of the stakeholders are in line with them.
and hopefully in 2026 it can be carried out. But we have another options with respect to national economic surveys that has been um, published every year, and they also give some sort of clues that what would be the uh, 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 points of gaps have been identified or not, and what sort of areas which need to be addressed in our national nutrition survey. And in the same way, we have incorporation of those data which is incorporated in the nutrition survey. But that was, I think, the data credibility is one of the factor that we need to just follow those things, or we need to identify the sources of gaps which have been incorporated in the nutrition survey, and which will be reflected in even UN websites, but it was not as much evident which were can be. So we need to, um, as Dr. Taira said, we need to establish our some at platform at the federal capital level by the incorporation of all the partners and stakeholders. That excellent. So, Dr. Asif Sab, I will come back to you again on research and development. आपने बात की मुझे as you are food technologist and my again question to you is that okay, this is the different methods where you can fortify your food. What are the natural ways to fortify the overall crop production or food system so that it comes natural to the human? Another thing is that what are the other areas of research still pending which need to be conducted regarding the nutrition aspects in Pakistan? Rather it's a consumer based, rather it's a production based, rather it's a processes that the fortification is conducted. So over to you, sir. Thank you, Dr. Dash. Basically, there are different strategies for the fortification. So if we combine it with the agriculture, so there is a concept of the biofortifications. You might heard about the sinkhole variety. Basically, it's a biofortification technique that's combined with the agriculture, especially the plant breeding and genetics. Second option is at the industrial level. When we talk about at the mass fortification program. So for the industrial processing, there are several options. So we have to take into consideration about the bioavailability of the salts. So if we talk, for example, if we talk about the iron fortification program, there are numerous salts that are available with different characteristics. One of the salt is the ferrous gluconate. So that's highly bioavailable and have a good organoleptic properties with that. On the other hand, if we use the ferrous sulfate in some of the products, again, it's an iron salt, iron fortification salt. So that's not, although that's have a greater bioavailability, but that's not have good organoleptic properties. उसका taste अच्छा नहीं होता, रोटी में शायद वो color, उसमें green सा color वो जो है वो आएगा. So that's not organoleptic priorities on that. Same is the case with the calcium. About more than 12 salts of the calcium that have the application at the industrial level, and industry is using them, but have the different characteristics.
कोई 9-10 साल पहले एक मैंने बुक चैप्टर लिखा था उसमें elsewhere that was published in the elsewhere and that was the iron fortification calcium fortification in the dairy products. So all of the salts, possible salts from the industrial processing point of view, I have discussed in detail what kind of the salt that can be used for what kind of the situation. That was discussed in details. So on the commercial scale nowadays, that is actually applicable in Pakistan. So there are some of the mixed salts that are being made available in Punjab, especially Punjab's province. That was several companies, they are working on that, and the Nutritional International, they are bringing those pre-mixed salts into Pakistan. And that is being used. That's especially containing, especially the zinc, iron, calcium, and two, three more salts with that. So it's a premix, and that is advisable to be used at the आटा चक्कीस जो हमारी आटा चक्कीस वगैरह. So Punjab government they are making some of the local legislation for this fortification programs. So that will become mandatory in near future, that the local atta chakis that will be using such kind of the strategies for combat this situation, especially the iron. The iron is one of the bigger menace among these situations in Pakistan, and especially iron deficiency, anemia, that's very common. Another is the folic acid. Folic acid, especially in the pregnant females or the childbearing age females, there are some of the neural tube defects, and that is affecting the newborn babies. So iron along with the folic acid, that is the strategy to fortify in our wheat flour. Thank you. Thank you, Dr. Saab. Dua, I just like to know, okay, if your work is on some public-private partnership, how we can improve this fortification, nutrition value in our food. So what is the ways that the small and medium enterprises can come into that business and then provide widespread food fortification to the communities? Public-private partnerships, its importance is underscored by the fact that public sector can provide policy framework, credible evidence, and community outreach, while the private sector has, as I said before, they have marketing expertise, consumer insights, and supply chain efficiencies. They have the resources to bring those about. So when they work together, this partnership can make fortified foods both visible and desirable to consume across all income levels. And we have recently launched such an alliance between which is called Pakistan Alliance for Food System Transformation. And that alliance has brought together public sector institutions, private entities, academia, civil society organizations, and media to drive evidence-based policy making for food system transformations within Pakistan. And basically is to start a discourse and start research and discourse and advocacy for how food outcomes and healthy food outcomes can be improved in Pakistan, including fortification. And so the aim of this alliance is to bridge policy critical gaps by integrating data and evidence in policy formulation and reforms, because both sectors have their own pros, they have their own strengths. And so if we use them in a way that is beneficial for both, we can achieve better advocacy, better reach for the fortification programs overall, and can support, and it can also help accessibility also. At the same time as co-branding initiatives where fortified products carry government and NGO
endorsed logos can enhance consumer trust and signal affordability. If they have credible data as food system dashboard, there is a food system dashboard available. If they have credible data available there, private sectors can utilize that to increase their marketing strategy or their policy, their strategy in the future. So these are some ways that maybe public-private, the importance of public-private partnership is seen and can be utilized. तो ये जो जनरेशन जी है या अल्फा जो भी आजकल चल रही है, व्हाट यू थिंक है उनको कैसे हम इस तरफ ला सकते हैं कि मोर न्यूट्रिशियस फूड खाएं rather than go for the fast food and all these stuffs? So इसमें what's your generational take in that? Actually, Gen Z is more critical of what they eat. They're more aware, or आजकल there's a trend of healthy eating, and there's like we consume information through TikTok and Instagram, and not through, and so our attention span is small, but we are more mindful of what we eat. So utilizing social media, I think, would be the best opportunity. What we hear coming from an influencer's mouth is actually more credible nowadays for some of the people. And so taking those influencers or those credible people, not credible influencers on board, might help influence people or to eat fortified food, because now everyone almost has a TikTok or Instagram on their phone, be it from any social strata they belong to. So that is the most, that's the best medium to channel the message of fortified food. And people do listen, they do get influenced, because this generation is easily influenced by influence. So thank you very much. Now I'll stop here, and then I invite questions from the panel before I go to the experts for the final policy, one or two policy recommendations or research areas they want, particularly on nutrition side. Any questions from the panel, from the audience, please? Yes, please. We have currently, Hello. Ma'am, my question is from you. And it's about, since wheat is currently regulated by food departments, do you think that bringing it under jurisdiction of food authority can somehow improve the fortification status collectively? Yes, definitely. Assalamualaikum. That was a very interesting discussion. My name is Alishba. I'm working with CHPI STPI. So I have two questions. One would sound more like a comment. We were discussing about wheat fortification and wheat being a staple food, but we see that recently there is a deregulation in the wheat market, which is putting wheat's affordability for certain income groups in question. So if anyone would like to comment in that sense, if wheat is a staple food, so why are we deregulating it? Because if it's not affordable, then nutritional content to uska baad mein aata hai na. Second is an observation कि fortification को हम mandatory कर सकते हैं कि नहीं. For example, कि अगर हम इसको मैंडेटरी करें and we make all big cash and carries compliant of this कि आप non-fortified brands नहीं रखेंगे. So can it help in enforcing and compliance for fortification? That's it. क्वेश्चन आपकी तरफ से, मैडम प्लीज. क्वेश्चन. Thank you so much for your question. Definitely थोड़ा सा एक इशू है हमारा jurisdiction का, फूड डिपार्टमेंट और फूड अथॉरिटीज का, लेकिन फूड अथॉरिटीज इसमें अपना रोल प्ले कर सकती हैं, क्योंकि जो फूड डिपार्टमेंट है, जैसे उन्होंने क्वेश्चन किया कि वीट की अवेलेबिलिटी, फूड डिपार्टमेंट का काम है कि वो जो
हमारी स्टेपल फूड है, व्हीट है या शुगर है, उसकी स्टॉकिंग को चेक करेंगे, उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेंगे, उसकी क्वालिटी के हवाले से या उसके अंदर फोर्टिफिकेशन के हवाले से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फूड अथॉरिटीज डेफिनेटली उसमें रोल प्ले कर सकती हैं और कर भी रही हैं। जितनी भी आटा चक्कियां हैं वो सारी फूड अथॉरिटीज उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस कर रही हैं। और जो वो इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त मैंने बताया कि 16 चक्कियों ने वॉलंटियरली आयरन फोर्टिफिकेशन स्टार्ट की है, तो वो एनआई को इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने हेल्प आउट किया उन तक रीच आउट करने में और उसको स्टार्ट करवाने में। तो अगर ये हम इसके लिए रेगुलेशंस बना देते हैं और इसको कंपलसरी कर देते हैं एज शी सेड, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेफिनेटली हम इंश्योर करेंगे। जैसे मैंने बताया कि सॉल्ट के अंदर हम आयोडीन को चेक करते हैं तो वो किसी भी उसमें बड़े मार्ट नहीं आएंगे, उसमें छोटी चक्कियां भी आ जाएंगी। तो हम उन्हें ये कहेंगे कि आप जब इसको फ्लोर में कन्वर्ट करेंगे वीट को, तो आप इसके अंदर फोर्टिफिकेशन करेंगे। जस्ट लाइक माइक्रो फीडर्स साल्ट की यूनिट्स पे इंस्टॉल है, उसी तरह इनको भी इंस्टॉल करवाए गए हैं। तो वो वहां पर ही हम इंश्योर कर देंगे, तो मार्केट में अवेलेबिलिटी डेफिनेटली होगी उसकी। डॉक्टर तनवीर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? प्लीज, एनआई की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते रहे हैं, लेकिन एक रिवॉल्विंग फंड के थ्रू हमारे पास जो पोटाशियम आयोडेट की इंडक्शन होती थी पाकिस्तान में या डिफरेंट कंट्रीज में, वो लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू। अभी एक नया इनिशिएटिव उनकी तरफ से आया कि जो हमारे लोकल वेंडर्स हैं उनको हम स्ट्रेंथन करें बाय प्रोवाइडिंग पोटाशियम आयोडेट। अब उस पोटाशियम आयोडेट की हैंडलिंग शिपमेंट से लेकर आगे उसके फोर्टिफिकेशन तक के जो प्रोसीजर्स हैं उसको रेगुलेट किया जा रहा है या इन फ्यूचर किया जाएगा, उस पर कुछ डॉक्यूमेंट्स डेवलप हो रहे हैं। तो इस हवाले से अगर लोकल वेंडर्स को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि हम फोर्टिफिकेशन या फोर्टिफिकेंट्स को आम पब्लिक तक लाने की तरफ जा रहे हैं, और उसमें फिर फूड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की जो लिमिटेशंस हैं वो भी रेक्टिफाई होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा ये है कि पोटाशियम आयोडेट और से अबाउट अगर आयोडीन या अदर मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरफ हम फोकस करें तो हमारे पास एक और टूल किट है जिसको हम कहते हैं फोर्टीमैस। फोर्टीमैस ये है कि फोर्टिफिकेशन थ्रू मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन सिस्टम। उसमें जो आपके पास लोकल प्रोडक्शन होती है या इंपोर्ट आइटम्स होती हैं, उन दोनों चीज़ों को हम कोरिलेट करते हैं एट द लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन। अगर उसमें कोई गैप्स आ रहे होते हैं तो वो फिर उसकी जो प्रोसेसिंग है वो मुनासिब नहीं हो रही, फिर वो गैप्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो implementation of Fortimass tools with respect to each micronutrient will help in future so that we can have the uh, uh, production or imported quantity with respect to utilized quantity. And role of vendors and local retailers and distributors would be rectified in this regard, and regulatory bodies will be also strengthened to ensure this activity. Thank you. Thank you, Dr. Asif. Please. Actually, regarding the your question, first of all, हमें ये समझना होगा कि जो deregulation of wheat है, that's quite a different subject as compared to the processing side. The fortification that actually have a concern with the on the processing side. So जब गंदम जो है मिलर्स के पास आ जाती है, चक्की वाले के पास आ जाती है, मिलर्स के पास, मिलिंग इंडस्ट्री के पास आ जाती है, तो बेसिकली जो फोर्टिफिकेशन का काम है वो वहां से शुरू बेसिकली वो होता है। तो इसको हम दो तरीके से दुनिया में ये टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है। वन इज टू मेक इट मैंडेटरी थ्रू द रूल्स रेगुलेशन, गवर्नमेंट की तरफ से जो है कुछ फ्रेमवर्क बनाया जाता है उसका। और दूसरा जो है इट्स अ वॉलंटियर। पाकिस्तान में जो चलता है इट्स नॉट अ मैंडेटरी। जो जितने भी पहले भी हमारे यहाँ प्रोग्राम चलाए गए हैं
these all are the voluntarily basis. तो एक तो हमें समझना है कि जो फ्यूचर के भी हमारे पास प्रोग्राम होंगे फोर्टिफिकेशन में वो वॉलंटियरली बेसिस पर हों। तो जब एक्टिविटीज वॉलंटियरली बेसिस पर चलती हैं तो मैंने बिल्कुल शुरू में अर्ज किया था कि हमें अवेयरनेस बढ़ाने, मैस अवेयरनेस बढ़ाने की तरफ तवज्जो देनी होती है। तो हमें जो मैंने 3 prong स्ट्रेटेजी बताई थी जो हमें अपनानी चाहिए, उसमें द थर्ड नंबर इज द मैस अवेयरनेस। तो हमें यहाँ पर वॉलंटरली एक्टिविटीज के लिए अवेयरनेस बढ़ानी है फॉर द कंज्यूमर। तो जब कंज्यूमर को अवेयरनेस होगी, कंज्यूमर खुद डिमांड करेगा कि हमें फोर्टिफाइड प्रोडक्ट चाहिए ताकि हमारी जो न्यूट्रिशन की जरूरत है वो पूरी हो सके। तो दैट्स द ड्राइविंग फोर्स फॉर द मार्केट के लिए वो ड्राइविंग फोर्स होगी। और वो जब कंज्यूमर मांगेगा तो प्रोसेसर लाजमी वो चीज जो है प्रोड्यूस करेगा, डिमांड एंड सप्लाई उसके हिसाब से जो है वो ड्राइव होगी। एक तो ये बात। सेकेंडली द प्राइस मैकेनिज्म। जब हम फोर्टिफिकेशन करते हैं तो दैट इनकर सम ऑफ द प्राइस। यही हमने सॉल्ट के केस में देखा। आप अभी भी मार्केट में चले जाएं, सुपर स्टोर में चले जाएं, तो जो आयरन फोर्टिफाइड सॉल्ट है थोड़ा सा उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। तो ये यहाँ पर भी कॉस्ट ज्यादा होगी। प्रॉपर एक जो रूल फोर्टिफिकेशंस का दुनिया में या वैल्यू एडिशन का जो एक रूल होता है कि आप अगर 1 penny उसके ऊपर लगाते हैं तो यू आर गेटिंग 10 pennies फ्रॉम दैट, एटलीस्ट 10 pennies फ्रॉम दैट आप प्रॉफिट में अर्न करते हैं। तो जो फोर्टिफिकेशन का एक पर्पस होता है वो प्रॉफिट अर्निंग का एक पर्पस उसमें जो है वो होता है। तो अगर चक्कियां जो है वो फोर्टिफिकेशन, आयरन फोर्टिफिकेशन की जानिब जाएंगी, यकीनन जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट उनको जो है वो अवेयरनेस देगी। और तो वो यकीनन थोड़ी सी उसमें जो है वो प्राइस कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी फॉर द कंज्यूमर। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे पास मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन का मैकेनिज्म कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है पाकिस्तान। ये हमने आयोडीन के केस से भी सीखा, लर्न किया है। और दीगर जो सॉल्ट्स को हम फोर्टिफाई करने जाएंगे उसमें भी ये आएगा कि हमें मैस मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन का प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लैब्स मैकेनिज्म्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट टू मच स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द लैब्स। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमने वो कुछ हिट बेस्ड मेथड्स वगैरह इस्तेमाल किए हैं। आयोडीन के केस में भी हम वो इस्तेमाल करते हैं। NIH ने उसके ऊपर बहुत सारा जो है वो काम किया है। तो वो इट्स अ स्मॉलर स्ट्रेटजी ऑफ ऑल द मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन प्रोसेस। अच्छा, एक और जो हमारे यहाँ कमी फील की जाती है वो हमारे यहाँ सेपरेट लेबलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। थोड़ा सा हिस्सा पंजाब फूड अथॉरिटी के रेगुलेशंस में हमें मिलता है लेबलिंग के ऊपर, लेकिन सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लेबलिंग के हैं ही नहीं। इस वजह से कंज्यूमर लेबलिंग को देखता भी नहीं। तो लेकिन अगर हम USA का मॉडल उठाएं, FDA इज वर्किंग ऑन दैट, FSIS इज वर्किंग ऑन दैट इन द, और they developed their labeling rules and regulation in 1990s. उस डिकेड के अंदर बने हैं। they are working very good. लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लेबलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन ना होने के बराबर है। सो ये हमारी एक हमें समझना चाहिए कि इस एरिया में एक शॉर्ट कमिंग है और हमें इसके ऊपर मजीद काम करने की जरूरत पेश आएगी। जब तक हमारे पास वो फ्रेमवर्क नहीं होगा हम चीज़ों को चेक नहीं कर पाएंगे। तो ये चंद एक गुजारिशात आपके, और यहया ने जो क्वेश्चन किया था उनके जवाब में जो है। जी थैंक यू डॉक्टर साहब आपका।
No, I request from the reverse order the 2 or 3 policy recommendations related to the food fortification, related to the in terms of processing, the policy side, what changes we need to ask to the government. Digital tools, whatever you in mind or discussions. So what are the 1 or 2 key policy updates you can give us? Thank you. Reiterate my previous point about public and private partnerships that we need to work on multi-sectoral approaches now for national fortification strategy to bring a change and basically make fortified food not only accessible but affordable, because affordability is the key issue right now. So that would be my only point. And thank you. No, sir. I will ask the use of the SMEs. SME किसी भी मुल्क की तरक्की का एक बड़ा राज होते हैं, and luckily we have a good infrastructure for the SMEs. More than 5 million enterprises working in our country, and most of the biggest part of that is of that SMEs is working in the food sector. Number 2 के ऊपर जो है food sector में SMEs काम कर रही हैं, तो हमें उसको utilize करना है for the purpose of the food fortification. The government policy should be inclined towards that. Then we have to mobilize the lab infrastructure, कुछ existing है हमारे पास, academia और research organization की labs को हम strengthen करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं. और thirdly, the rules and regulation. There is a big need for some of the rules and regulation on the labeling side. वो हमारा एक weak जो है area है, जिसके ऊपर again legislation वो government level के ऊपर जो है वो काम करेंगे. और NGOs that can bring awareness among the masses. तो चूंकि मीडिया का दौर है, तो हमारी NGOs through the media that can make the change. Thank you, Dr. Sir. मैं डॉक्टर आसिफ साहब की बात को एंडोर्स करूंगा. ये एक होलिस्टिक अप्रोच होती है जिसमें आप किसी भी चीज को रेक्टिफाई करने के लिए सारे पार्टनर मिलकर काम करते हैं. तो अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को एड्रेस करना चाह रहे हैं और फोर्टिफिकेशन के थ्रू देखना चाह रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा कि हम ग्रास रूट लेवल से शुरू करें. विद रिस्पेक्ट टू रेक्टिफिकेशन ऑफ दीज डेफिशिएंसीज और मेल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करने के लिए जो हमारे इनिशिएटिव हैं कुछ मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ से और प्लानिंग से, उनको स्ट्रेंथन करना है और उनको एग्जीक्यूट करना है. उसमें ग्रॉस रूट लेवल से नंबर 1 है 1000 days from the point of conception to 2 years of age. After that child health. फिर उसके बाद है हमारे पास स्ट्रेंथनिंग ऑफ लैब्स. फिर उसके बाद हमारे पास कैपेसिटी बिल्डिंग है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग्स एंड ऑनवर्ड. फिर उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो जो स्कूल मील है उसमें और डीवर्मिंग और ऐसी सिचुएशन जिससे मेल न्यूट्रिशन के अदर फैक्टर्स प्रोवोक करते हैं, उनको रिड्यूस किया जा सकता है. फिर सेकंड लास्ट में आप उसकी जो बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स हैं मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के हवाले से उसको डिसेमिनेट कर सकते हैं, अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं. लास्टली जितने भी पार्टनर्स हैं उनको कोऑर्डिनेटेड वे में हार्मोनाइज प्लेटफॉर्म दिया जाए तो ये सारी चीज़ें अचीव हो सकती हैं. लेकिन इनमें से कोई भी गैप मिस होगा, हम किसी भी चीज़ को रेक्टिफाई नहीं कर सकेंगे. डॉक्टर ज़ारा एक बात उन्होंने बड़ी इम्पोर्टेंट की है कि ऑल डिपार्टमेंट्स कैन वर्क कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें. दैट्स वेरी बिग चैलेंज. फूड डिपार्टमेंट है, फूड अथॉरिटीज़ हैं और MNFSR है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तकरीबन 1 दर्जन के करीब हैं. तो और फिर हर एक आफ्टर 18th अमेंडमेंट द प्रोविंसेस आर फ्री टू यानी कि उनकी अथॉरिटीज़ और वो इंटरलिंक. तो ये सारे जो इंटरकनेक्टेड और इंटरलिंक चीज़ें हैं, हाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड इन दिस. मैं इसी पॉइंट की तरफ ही आना चाह रही थी. उसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो हमारी जो प्रोविंशियल फूड अथॉरिटीज़ है ना, उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है. वो किया जाए जस्ट लाइक जैसे जो न्यू अथॉरिटीज़ हैं, इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी है, इनको आपने
हर लिहाज से स्ट्रेंथन करना है, आपने इनको एचआर बढ़ाना है, इनको लैब्स प्रोवाइड करें, उसमें हेल्प आउट करे गवर्नमेंट। और सेकेंडली फिर लेजिस्लेटिव मेयर्स, आप जब तक कोई कानून साजी नहीं करेंगे तब तक इम्प्लीमेंटेशन करवाना मुश्किल है। वॉलंटियर बेस पे आप कितना काम करवा लेंगे? तो लेजिस्लेशन जो है वो बहुत जरूरी है, ये हो जाएगी। और उसके साथ ये जितने डिपार्टमेंट्स हैं, अब ये बिल्कुल नहीं है कि जो साइलोज में डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं हमारा आपस में इंटरेक्शन नहीं होता, होता है। कोई चीज रिक्वायर होती है हम एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन जो बेस्ट सोल्यूशन वो ये है कि कोई एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हम डेवलप कर लें जहां से ये डाटा पूल बन सके और हर एक को एक्सेस हो जाए। वो ये जो 12 डिपार्टमेंट अलग अलग काम कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा एक सिस्टम बना दिया जाए जहां पर इनका एक एक रिप्रेजेंटेटिव बैठ जाए, जो इनका डाटा है वो भी उधर हो हमारा भी हो, तो किसी को भी मतलब मुख्तलिफ जगहों पे फिरने की जरूरत नहीं है, आप एक पॉइंट पे जाके वो सारी चीजें कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये सर्वेस की बात हुई थी, जैसे न्यूट्रिशन सर्वे की बात की कि 2018 के बाद अभी तक नहीं आया था। इतना टाइम, इतना गैप क्यों आया? क्योंकि आपको जगह जगह से कलेक्ट करनी पड़ी चीजें। तो जब हमारे पास सेंट्रलाइज सिस्टम होगा तो वो हमें अवेलेबल हो जाएगा। और एक और चीज जो मैं इसमें कहना चाह रही हूँ वो ये है कि आपको पायलट स्केल पे अवेयरनेस स्टार्ट करनी पड़ेगी, उसमें टीवीसीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे साल्ट में आयोडीन की फोर्टिफिकेशन की दफा वो एक हांडी के निशान वाला जो नमक था ना, वो हमने छोटे होते सुना है, इन बच्चों ने तो नहीं सुना होगा, लेकिन वो एक चीज माइंड में बैठती थी, वो अभी तक हमें याद है। तो इस तरह की अगर हम टीवीसीज करेंगे, अब मोबाइल का टाइम है, जैसे ही कॉल मिलाएं हमें अगर मौसम की सूरत हाल वो बता सकते हैं, कंट्री की सूरत हाल बता सकते हैं, तो उसमें अगर ये फोर्टिफिकेशन के मैसेजेस हम इस तरह से वो चलवा दें उनके थ्रू, तो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा 50 to 60% हमारा काम हो जाएगा, हर किसी के कानों तक हमारी बात पहुंच जाएगी। तो ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी। थैंक थैंक यू वेरी मच। आई थिंक काफ़ी डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने की है। ऑफ कोर्स यू हैव एंजॉयड इट। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें टच की हैं, पर्टिकुलरली इन्फोर्समेंट जो फोर्टिफिकेशन की, न्यूट्रिशन की, उसकी बात की हुई, डिजिटल टूल्स जो चेकलिस्ट के वो ऑटोमेटेड चेकलिस्ट हों जिससे हम न्यूट्रिशंस को मेजर कर सकें और उसको उसकी कंप्लाइंस कर सकें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की, डाटा खासतौर पे डाटा गैप्स और रिसर्च गैप्स की वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लैब्स, स्टैंडर्डाइज्ड लैब्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि वो जो स्टैंडर्ड्स, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, how they are linked with our standards, because we have a different geography, different climate. So of course जो ये nutrition है उसकी mix और उसकी चीज़ें भी different होंगी because of our body size. So इस तरह की एक बहुत सारी discussions हैं। कंज्यूमर एजुकेशन एंड अवेयरनेस पे बात हुई है। बहुत अच्छी सजेशंस भी आई हैं। ऑफ कोर्स टिकटॉक और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैसेज आपके जहन की तरफ पहुंच जाए। हमने जो बचपन में जो मैसेज दिए थे और वो अभी तक प्राइमरी एजुकेशन के अंदर ही अगर हम लोग ये चीज़ें कुछ ऐसी हम वी कैन इंट्रोड्यूस इन द करिकुलम, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मल्टी सेक्टर जो कोलैबोरेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे SMEs ख़ास तौर पे उनको एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरी जो चीज़ें हैं उस इनकरेजमेंट में, उसमें लीगल एस्पेक्ट्स जो भी लिमिटेशंस हैं, गैप्स हैं, वी नीड टू कम अप विद दैट कि वो उसको रिड्यूस किया जा सके। तो वंस अगेन आई थैंक यू माय पैनल for the expert opinion and giving us time to discuss the issues on nutrition. So I request Qasim Sahab, Executive Director, Deputy Executive Director, SDPI, to give annual books to SDPI books to the panelists.